Good morning to everyone. So this is the subject what I am going to start today, corporate financial accounting. You have this subject in the second semester, in the fourth semester, which is the even semester of part 2, MCOM part 2, and fourth semester of the MCOM program, corporate financial accounting. So let us first discuss what are the topics you have in this subject. There is the syllabus. Syllabus in this semester for this particular subject, that is corporate financial accounting. You have the first chapter, corporate financial reporting. This is a theory this is a theory chapter. So there is no practical aspect, practical sums are not there. It is theory, fully theory chapter, corporate financial reporting. Then you have international financial reporting standards. We call it as IFRS, International Financial Reporting Standards. These are generally implemented by the multinational companies who are multinational companies. They have headquarters in one country and have their business units set up all over the world. So these companies, to have a common accounting standards, what they do, they implement IFRS, in International Financial Reporting Standards. So then there can be a common aspect when all the treatment, accounting treatment, everything can be common if they implement International Financial Reporting Standards. These are, as I told, generally done by the multinational companies. So international, and with this, there is also what you say, Indian accounting standards. So you have international financial reporting standards and IS, that is Indian accounting standards. So what we have done, the accounting standards have been like made it with similar to the international financial reporting standards, and that is Indian accounting standards. We will be doing but some of the Indian accounting standards, and there is practical sums also, depending upon few of the international not few of the Indian accounting standards, wherein you have in your syllabus, which we will be doing in this chapter. So in this chapter, and one chapter, one accounting standard, one day, मतलब छोटे छोटे sums है जो कि हम लोग करेंगे ये chapter में. So few Indian accounting standards are there, which we will do. International Financial Reporting Standards and Indian Accounting Standards. Then you have this chapter, Valuation of Business for Amalgamation and Merger. If you all students from BCom or BAF, then amalgamation is not a new chapter for you. Amalgamation you have done in your second year
as well as in your third year. Second year, it was amalgamation of firm, and third year, amalgamation of companies. But here we are not talking about amalgamation or merger. Here we are talking about valuation of business. If you are a BAF student, you have done this chapter before, where we will be now when you are valuing your business, what we will be calculating, what we will be doing in this chapter is we will be valuing the goodwill. When the business is valued, when is the business valued? When is a need to value the business? When there is a sale. When there is a purchase or a sale of the business, what we do, we value the business. So how is the valuation done? You have to calculate the value of goodwill of the business which is being sold. So हम जो business sell होने वाला रहता है या purchase होने वाला रहता है उस business के goodwill को value करते हैं. Then goodwill is a chapter which you most of you have who are from commerce background must have done in the 12th standard, valuation of goodwill. Yes, this will be the advanced version of the goodwill what you have done in your 12th standard, but the basic remains the same. So in this chapter, we will be learning about goodwill, how to value the goodwill, and I hope maximum of you know what is goodwill. Goodwill is the reputation of the business. So that valuation we will do in this chapter, and along with valuation of goodwill, we also will be valuing the shares. तो जो कंपनी का शेयर्स है उसका भी valuation हम करेंगे. There are certain methods to calculate goodwill as well as to calculate the value of shares, which we will learn in this particular chapter, valuation of business. In this, we will be doing valuation of shares as well as valuation of goodwill. Certain methods are there which we will see when we will be doing that particular chapter. Then the last chapter what you all have in this semester is the consolidated financial statement. Now, what is consolidated financial statement? We will see today because we will be starting with this chapter, consolidated financial statement. So I will explain in detail what is this consolidated financial statement. Consolidated financial statement. Now, I hope maximum of you, or I should say all of you, know what is a financial statement. Now, being in MCOM, you must have heard this financial statement right from your junior college. Now, what is a financial statement? Financial statement means your trading account, profit and loss account, and your balance sheet. This in all of them constitute your financial statement. Now we are trying to consolidate. Consolidate means to merge the financial statements. So consolidated financial statement is prepared when there is a acquisition of more than 50%. Now maximum, that is when there is a acquisition of maximum shares by a company who is known as a holding company. Now, what you mean by maximum? Maximum means more than 50%. अगर
आप इक्वल शेयर्स परचेस करोगे 50-50, then there will not be a majority holding by any of the company. When a company holds the maximum number of shares in the other company, then the company which holds the maximum shares becomes the holding company. So here and then finally हम ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड में प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम होल्डिंग कंपनी के सारे असेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड the other company whose maximum shares have been purchased, which is known as a subsidiary company, दोनों कंपनी के सारे assets and liabilities को मर्ज करके हम कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, कंसोलिडेटेड और कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बोथ द कंपनीज, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी. नाउ वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन यू. नाउ लेट मी फर्स्ट राइट व्हाट इज अ होल्डिंग कंपनी. What is a holding company? So holding company a holding company is a company which acquires means purchases majority, that is maximum shares. अब now maximum means what, majority means what, I will write in bracket more than 50%. Maximum majority shares in another company is known as what you say, holding company. For example, let me give you an example also. In other company, so for example, A Limited acquires 65% shares in B Limited. In this case, A Limited becomes the holding company of B Limited. Did you understand this example? Who is called as a holding company? Holding company is a company who acquires majority, that is maximum shares in another company. Now I have given an example. A Limited acquires 65% shares in B Limited. Now A Limited becomes the holding company of B Limited. It has holding company means it has controlling powers in B Limited because it holds maximum number of shares in B Limited. A Limited acquires the more than 50% shares. तो यहाँ पे अगर ऐसा रहता 65 के बदले इधर रहता 50, then can A Limited become the holding company of B Limited? If A Limited acquires 50% shares in B Limited, tell me, if A Limited acquires 50% shares in B Limited, then can it be a holding company? No. For it being a holding company, it should acquire more than 50%, then 51% or more than 51% shares होगा,
ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के, तो हम बोलेंगे ए लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ बी लिमिटेड. ए लिमिटेड has controlling powers because it holds the maximum shares in B limited, so it becomes the holding company of B limited. Any confusion here, anyone in holding company? Because I have explained you A limited acquires maximum shares. 51% भी हो सकता है and 51 से ज्यादा 100 भी हो सकता है. See, it can be from 51 to 100, that becomes maximum shares. Maximum shares मतलब more than 50%. अब more than 100% is also more than 50%. So 50% से ज्यादा, that is 51%, right? अगर यहाँ पे 51 लिखूं तो भी होल्डिंग कंपनी है, 65 लिखूं तो भी ए लिमिटेड becomes a holding company. So this example I have given, I hope you all have understood what is a holding company. Now let us go to the next one, that is the other company whose shares, maximum shares have been acquired. उसके बारे में देखते हैं. That is a subsidiary company. Who is a subsidiary company? Subsidiary company is a company whose majority shares are being purchased by another company. इसका मैक्सिमम शेयर, जिस कंपनी का मैक्सिमम शेयर्स परचेस होता है, दैट इज अ सब्सिडरी कंपनी. जो परचेस करता है, द वन हु इज परचेसिंग द मैक्सिमम शेयर्स इज अ होल्डिंग कंपनी, एंड हुज मैक्सिमम शेयर्स हैव बीन परचेस्ड इज अ सब्सिडरी कंपनी. So I can again give you an example here. For example, here A limited, same example, A limited acquires, let me write any percentage we can write, 60% shares, or you may write 51 also, anything you can write, but more than 50 in B limited, right? Same, A limited acquires 60% shares in B limited. In this case, B limited becomes the subsidiary company of A limited. So what happens in this situation? When whose maximum shares have been purchased becomes a subsidiary company to the other company, and who acquires the maximum shares becomes the holding company. So got the difference? जो मैक्सिमम शेयर्स खरीदता है उसको होल्डिंग कंपनी बोलते हैं, जिसका मैक्सिमम शेयर्स खरीदा जाता है उसको हम बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी. Okay, so this can be given in by other way also. This can be given by other way also. जैसे for example, one more example let me give. A limited had 3,000
shares out of which H Limited acquires 2000 shares. Now tell me, in this situation, who is the subsidiary company and who is the holding company? Here in this example, what happens? A Limited had 3000 shares and out of which H Limited acquires 2000 shares. So how much percentage shares have been purchased? See, let us see. 2000 purchase kiya out of 3000 means how much percentage? Percentage nikalo. You get 66.67%, which is more than 50%, which is more than 50%, right? So what happens? H Limited becomes holding company of A Limited as it acquires majority shares in A Limited, right? More than 50% shares. Now, what will be our first step is to find out the holding ratio. Now, what is a holding ratio? Holding ratio. What is a holding ratio? Holding ratio means shares held by holding company in the ratio of shares held by subsidiary company. This holding ratio gives us the relationship between the shares held by the holding company as well as the shares held by the subsidiary company. So in this example, let us take this example that A Limited had 3000 shares, out of which H Limited acquires 2000 shares. So we saw that H Limited ne 2000 out of 3000 shares acquired kiya. So H Limited becomes 66.67% holder of A Limited, क्योंकि टोटल 3000 में से 2000 नंबर ऑफ शेयर्स H लिमिटेड ने परचेज किया. सो H लिमिटेड बिकम 66.67% होल्डर ऑफ A लिमिटेड. So then when we calculate the holding ratio, how it will be? Shares held by holding companies 2000 and shares held by the subsidiary companies, how much? Can anyone tell me? A Limited has 3000 shares और उसमें से 2000 shares H Limited ने परचेज किया. तो होल्डिंग कंपनी बन गया H Limited and holding ratio में shares held by holding companies 2000. Now tell me how much shares will be held by a subsidiary company, that is A Limited.
Yes, correct. It will be 1000 shares. 3000 में 2000 माइनस किया तो it becomes 1000 shares. So यहाँ पे चाहिए तो we can write here 1000. So this is what? This is the holding ratio. And चाहिए तो let us take this in next line, and here I will write what is the name, H Limited, and this is A Limited. Shares held by holding company is to shares held by subsidiary company. 2000 is to 1000. 3 zeros are common. When we cancel it, we are left with 2 is to 1. So 2 is to 1 is the holding ratio. What we have calculated is the holding ratio. How is it calculated? Shares held by the holding company equal to is to shares held by the holding company is to shares held by the subsidiary company. So that we calculate and then we cancel the zeros. We got the ratio. आपको 2000 is to 1000 रखना है तो वो भी रेशो है, बट आपको नंबर को छोटा करना है, जीरोस कैंसिल करना है, तो you can cancel the zeros. So this is the holding ratio. The first thing in every question what we will be doing is we will be calculating the holding ratio. क्या करेंगे? एवरी सम में हम पहले होल्डिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे. So what I will highlight here, whatever I have explained, holding company I have explained, then subsidiary company, then we have explained holding ratio. Now let us move ahead. Now let us move ahead and I will discuss the next concept, that is capital profit. Now when H Limited becomes the holding company of A Limited, it has controlling powers in A Limited. उसके पास मेजॉरिटी शेयर्स आने से उसके पास कंट्रोलिंग पावर आ जाता है. सो अब हम क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में हम होल्ड जो हमारा होल्डिंग कंपनी है उसके सारे प्रॉफिट्स को डिवाइड करते हैं बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी. सो वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट, मतलब यहाँ पे वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज कैप प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ओके, प्रॉफिट में what is a capital profit? So let us understand what is a capital profit. Capital profit refers to the profits of the subsidiary company, the profits of the subsidiary company before acquisition of shares by the holding company. So what do you mean by capital profit? Capital profits are those profits of the subsidiary company which are there
which have been earned by the subsidiary company before the acquisition of shares by holding company. मतलब देखो ये जो परचेस है मैक्सिमम शेयर्स का, ये कभी भी हो सकता है. It may be the first day of the year, that acquisition may take place in the middle of the year, first day of the year, last day of the year. ये acquisition कभी भी हो सकता है. तो जब ये एक्विजिशन होता है तो बैलेंस शीट में एक्विजिशन से पहले तक जितना भी प्रॉफिट होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट. और ये कैपिटल प्रॉफिट को हम डिवाइड करते हैं बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ द होल्डिंग रेशियो. सो कैपिटल प्रॉफिट is divided, has to be divided between the holding company and subsidiary company on the basis of the holding ratio. So how do we calculate the capital profit? Capital profit refers to what? Capital profits are profits of the subsidiary company before its acquisition by the holding company. So profits होल्डिंग कंपनी क्या कौन है जो मैक्सिमम शेयर्स खरीदता है सब्सिडरी कंपनी का, तो वो एक्विजिशन आज हुआ तो आज से पहले जितना भी प्रॉफिट है सब्सिडरी कंपनी में, दैट प्रॉफिट इज नोन एज कैपिटल प्रॉफिट. बिफोर एक्विजिशन प्रॉफिट जितना भी प्रॉफिट है सब्सिडरी कंपनी में, दैट इज known as capital profit, and that capital profit has to be divided between the holding company and the subsidiary company on the basis of the holding ratio which we have seen just now. तो भले कैपिटल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो कि एक्विजिशन से पहले का प्रॉफिट है, स्टिल दैट द होल्डिंग कंपनी हैज द राइट ऑन दोस प्रॉफिट ऑल्सो. जो बिफोर एक्विजिशन खरीदने से होल्डिंग कंपनी ने मैक्सिमम शेयर्स खरीदने से पहले का प्रॉफिट है, स्टिल दैट प्रॉफिट आल्सो हैज टू बी डिवाइडेड बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ द होल्डिंग रेशियो. नेक्स्ट व्हाट इज दैट? कैपिटल प्रॉफिट के बाद लेट अस सी रेवेन्यू प्रॉफिट. Profits have been divided into two types. One is capital profit, other one is known as revenue profit. Revenue profit. So what is revenue profit? Revenue profit refers to the profits of the subsidiary company. So only the subsidiary company profits are divided. So subsidiary company after its acquisition by the holding company. Revenue profits also has to be divided between
the holding company and ये हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट क्या है, ये रेगुलर प्रॉफिट है, एक्विजिशन के बाद जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट है. सो दिस आल्सो हैज टू बी डिवाइडेड बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ द holding ratio. So this is also divided. So we have learned कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, दो टाइप का प्रॉफिट है. कैपिटल प्रॉफिट इज बिफोर एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ द सब्सिडरी कंपनी एंड रेवेन्यू प्रॉफिट इज आफ्टर एक्विजिशन. ये जो परचेस हुआ है मैक्सिमम शेयर्स, उसके बाद जो प्रॉफिट्स हुआ है सब्सिडरी कंपनी को, दिस इज दैट प्रॉफिट. बोथ ऑफ द प्रॉफिट हैव टू बी डिवाइडेड between the holding company and subsidiary company on the basis of the holding ratio. Now the next one, what we will see is, next concept, what we will see is, we say cost of control. Cost of control, which in bracket I will write goodwill or capital reserve. Now, because holding company is acquiring maximum shares in the subsidiary company, holding company title कैसे मिलता है उसको to a company when it acquires maximum shares in an other company. So here what happens, holding company maximum shares खरीदता है subsidiary company में, तो होल्डिंग कंपनी को कंट्रोलिंग राइट्स मिलता है. इट कैन हैव कंट्रोलिंग पावर ऑन द subsidiary company. Holding company has a controlling power, controlling rights on the subsidiary company, and to get this controlling power it has to bear a cost, because the holding company has a controlling power on the subsidiary. होल्डिंग कंपनी को क्या मिलता है, कंट्रोलिंग पावर मिलता है सब्सिडरी कंपनी में. तो बिकॉज ऑफ दिस कंट्रोलिंग पावर, फॉर दिस कंट्रोलिंग पावर देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व, एंड दैट कॉस्ट को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल. नाउ हियर देयर कैन बी टू थिंग्स, वन इज गुडविल एंड अदर वन इज कैपिटल रिजर्व. सो लेट अस first understand what is cost of control. Cost of control refers to cost incurred by the holding company to acquire the controlling rights in the subsidiary company. So what is cost of control? It is the cost which is incurred by the holding company. कुछ तो cost incur किया रहेगा holding company ने, so that it gets controlling rights in the subsidiary company. Let us calculate this cost of control. Cost of control कैसे calculate करते? Let us do that calculation of cost of control. Cost of control, इसमें we will write first thing what is cost of investment, that how much amount we have invested, spend to purchase the shares, maximum shares in subsidiary company. Cost of investment, कितना amount spend किया है to
purchase shares in subsidiary company, maximum shares in subsidiary company. This cost of investment is given in the asset side of balance sheet. Cost of investment आप कहाँ ढूंढोगे? You will find it in the asset side of the balance sheet. इसमें से less करते हैं, that is the capital profit of holding company. इतना इन्वेस्टमेंट किया, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख, एंड जो कैपिटल प्रॉफिट में होल्डिंग कंपनी को शेयर मिला, दैट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. मतलब क्यों ऐसे करते हैं? देखो, ये कैपिटल प्रॉफिट मींस द प्रॉफिट विच इज देयर विद द सब्सिडरी कंपनी बिफोर एक्विजिशन बाय होल्डिंग कंपनी. होल्डिंग कंपनी ने मैक्सिमम शेयर्स एक्वायर करने से पहले का प्रॉफिट ऑफ द सब्सिडरी कंपनी. सो ये प्रॉफिट भी होल्डिंग कंपनी को मिल रहा है, बट इसमें होल्डिंग कंपनी का कोई राइट नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये तो एक्विजिशन के पहले का प्रॉफिट है. तो ये प्रॉफिट को हम जितना पैसा हमने स्पेंड किया है फॉर बाइंग द शेयर, मैक्सिमम शेयर्स इन द कंपनी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मींस व्हाट? अमाउंट स्पेंड ऑन एक्वायरिंग मैक्सिमम शेयर्स. व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट? इट इज द अमाउंट स्पेंड फॉर एक्वायरिंग मैक्सिमम शेयर्स in the company, amount spent for acquiring maximum shares in subsidiary company. So तो हमारा कैपिटल प्रॉफिट इज द प्रॉफिट which is the profit before acquisition by the holding company. So वो प्रॉफिट में भी होल्डिंग कंपनी को हिस्सा मिलता है as per the holding ratio. So वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेस करेंगे. फिर इसके बाद हम लेस करेंगे शेयर्स हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी. that will be given in the question. तो होल्डिंग कंपनी के पास कितना शेयर्स है सब्सिडरी कंपनी का, ये भी लेस करेंगे. That time we will get the answer where या तो we will get goodwill, या तो we will, or else we will get capital reserve. This is cost of control, जहां पे we will find out goodwill और capital reserve. I'll explain this to you. Suppose हमने यहाँ पे कितना, ये ऊपर का एग्जाम्पल लेते, H Limited is a holding company. It has acquired 2000 shares. So 2000 shares के लिए suppose he has given, just for your understanding, 2 lakh. 2000 शेयर्स के लिए कितना पे किया है? 2000. और कैपिटल प्रॉफिट सपोज मिला है 60,000. कैपिटल प्रॉफिट कितना मिला? सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट बिफोर एक्विजिशन 60,000. और यहाँ पे लिखेंगे 2000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज का एक शेयर है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे होता है 20,000. करेक्ट? जो शेयर्स खरीदा है वो 2000 शेयर्स है, एंड एक शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपीज. सो 2000 into 10, this becomes 20,000. So now tell me whether it is a goodwill or a capital reserve. स्पेंड किया 2 लाख, 60,000 का प्रॉफिट ऐसे ही मिल गया, कैपिटल प्रॉफिट मिल गया, तो वो माइनस करेंगे 2 लाख में 60,000 प्लस 60,000 एंड 20,000, तो हमें यहाँ पे आंसर मिलता है 1 लाख
20,000 वी हैव स्पेंट। तो यहाँ पे क्या 2 लाख में ये मिला, तो हमने एक्स्ट्रा कितना पैसा दिया 1,20,000. That extra 1,20,000 we must have given for the reputation of the subsidiary company. 1,20,000 ये सिचुएशन में क्या हो जाता है गुडविल, ये सिचुएशन में क्या हो जाता है गुडविल के लिए दिया है 1,20,000. यही एग्जाम्पल सपोज 2 लाख हमने दिया, हमें कैपिटल प्रॉफिट मिला 60,000 एंड सपोज एक शेयर है 100 रुपीज का, तो यहाँ पे कितना होता है 2 लाख. तो अभी कितना आंसर मिलेगा, यहाँ पे भी नेगेटिव आंसर मिलेगा -60,000. क्या हुआ हमने इन्वेस्टमेंट किया 2 लाख का, फिर हमें फ्री में 60,000 का प्रॉफिट मिल गया, तो ये हो जाता है 1,40,000 एंड हमें शेयर्स मिला वर्थ 2 लाख का. तो अभी हमारे पास यहाँ पे हमें आंसर आता है -60,000, मतलब हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है. द कंपनी एच लिमिटेड जिसने इन्वेस्टमेंट किया ए लिमिटेड में, उसने सिर्फ 2 लाख रुपीस दिया, उसको 60,000 मिला कैपिटल प्रॉफिट में, और 2 लाख वर्थ का शेयर्स मिला, टोटल 2,60,000 का चीज मिला, बट इट हैज स्पेंड ओनली 2 लाख. ये जो सब होल्डिंग कंपनी है, इट स्पेंड 2 लाख एज इन्वेस्टमेंट, उसको मिला 60,000 का प्रॉफिट, 2 लाख का शेयर्स, मतलब टोटल 2,60,000 वर्थ का मिला. एंड इसका मतलब ये जो 60,000 नेगेटिव आंसर आ रहा है, इट इज कैपिटल रिजर्व. व्हाट इज इट? इट इज कैपिटल रिजर्व. जब यहाँ पे आपको नेगेटिव आंसर आता है तो इट इज कैपिटल रिजर्व, और जब भी आप एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो देन इट मे बी फॉर द रेप्यूटेशन ऑफ द कंपनी. सो हम क्या करेंगे हियर, फिर से पहले जैसा, for your understanding I had done this, and I will again make it and finally here also. तो यहाँ पे 2 चीज हो सकता है, इधर इट में भी गुडविल और इट में भी कैपिटल रिजर्व, दोनों नहीं हो सकता. या तो गुडविल होगा, या तो हम एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं तो गुडविल होगा, या तो हम कम पैसा दे रहे तो कैपिटल रिजर्व होगा. सो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में यू गेट गुडविल और यू विल गेट कैपिटल रिजर्व. Now next concept what we will do now is minority interest. Minority interest. Now let us understand what is this. This is the last concept which we will be discussing in this chapter right now. That is minority interest. Now, what do you mean by minority interest? What is a minority interest? Minority, यहाँ पे देखो, बताओ ये कंपनी में जो हम लोग यहाँ पे we are seeing, who has a minority interest in the company now? Who has minor number of shares? Majority shares has been acquired by the holding company. We have seen, I have explained you what happens here in this chapter. हमने देखा that majority shares जो है वो holding company acquire करता है, purchase करता है. तो minimum shares जिसके पास है, he has the minority interest in the company. Who has the minority interest? The subsidiary company जिसके पास पहले 3,000 shares था. पहले यहाँ पे देखो
A Limited has 3000 shares, out of which H Limited ने 2000 shares खरीद लिया. अब minority interest किसके पास बचा? A Limited के पास, who had earlier 3000 shares, is now left out with only 1000 shares because 2000 shares तो H Limited ने acquire किया. So who has a minor shares, minority interest in the company? That is the subsidiary company. The minority interest refers to the interest of the subsidiary company, after its acquisition. Subsidiary company after its acquisition. Acquisition के बाद जो भी सब्सिडरी कंपनी को हिस्सा मिलता है, शेयर मिलता है, that is the subsidiary company, sorry, that is the minority interest. What does minority interest mean? कि सब्सिडरी कंपनी को आफ्टर एक्विजिशन जो भी कुछ मिलता है, that is known as the minority interest. So calculation of minority interest. What is there? Shares held by subsidiary company. Subsidiary company के पास कितना मिनिमम शेयर्स है? 3000 था, अभी सिर्फ 1000 बचा. So 1000 into number, face value of the shares. Then add capital profit जो सब्सिडरी कंपनी को मिला, capital profits of subsidiary company. We are finding out the minority shares, minority interest. So capital profit सब्सिडरी कंपनी को जो मिला, add रेवेन्यू प्रॉफिट जो सब्सिडरी कंपनी को मिला, रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी. तो ये सबको ऐड करेंगे, वी विल गेट द माइनॉरिटी इंटरेस्ट. माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट ऑफ द सब्सिडरी कंपनी. लेफ्ट सब्सिडरी कंपनी का जो इंटरेस्ट बचा हुआ है अभी भी, that is known as minority interest. So it refers to the interest of the subsidiary company after its acquisition, what it is having left out in the company for itself. उसका जितना नंबर ऑफ शेयर्स बचा है, उसको जितना हिस्सा कैपिटल प्रॉफिट में मिला, उसको जितना हिस्सा रेवेन्यू प्रॉफिट में मिला, all added gives you the minority interest. So now we will start with the first sum of this chapter. I have explained you few concepts which is important in this chapter. Now I will start with the first sum. So summary balance sheet as on 31st December 2012. Liability side, asset side, two companies is given, H Limited and S Limited. The information balance sheet of two companies is given, H Limited and S Limited. Let us read the liability side. Shares of rupees, share capital of rupees 10 each, 1,50,000. So 1 lakh divide by 10, 10,000 shares. 50,000 divided by 10, 5,000 shares. So we can find out the number of shares also. Question में दिया ना, share capital of rupees 10 each.
तो 1 लाख में 1 लाख का शेयर कैपिटल है एंड 1 शेयर इज ऑफ 10 rupees. So we can easily find out the number of shares. 1 lakh divide by 10, we will get 10,000 shares. S Limited का 50,000 divide by 10, we will get 5,000 number of shares. Profit and loss account is there. General reserve is there and creditors is there. In the asset side, we have current asset 65,000, 60,000, and then we have investment 5,000 shares in S Limited. So कितना shares खरीदा S Limited का? किसने खरीदा? H Limited ने. H Limited ने S Limited का 5,000 shares खरीदा. 75,000 में, you can see here S Limited के पास टोटल कितना शेयर्स था? 50,000 डिवाइड बाय 10, 5,000 shares था and all the 5,000 shares of S Limited has been purchased by H Limited. H Limited ने क्या किया? All the 100 H Limited ने all the 5,000 shares of all the 5,000 shares of S Limited has been acquired by H Limited. H Limited becomes the holding company of S Limited by purchasing 100% shares of S Limited. सारा मैंने बोला था more than 50% shares. जब दूसरा कंपनी खरीदता है, it becomes a holding company and more than 50% also includes 100%. So सारा 100% shares has been acquired by H Limited. S Limited का all the shares. So H Limited acquired the shares of S Limited on 31st December 2012. जिस दिन का बैलेंस शीट है उस दिन सारा shares have been acquired. Prepare a consolidated balance sheet. Now acquisition has taken place on the last day of the year. 31st December का balance sheet है. नहीं, this becomes the first day ना. 31st December year end दिया है. Year end दिया है. And let us see. Year end, that is year end means the last day. Year end means the last day. So last day है 31st December 2012 and last day ही acquisition भी हुआ है. Acquisition took place on the last day of the year, that is 31st December. 31st December year end है and 31st December 2012 is the acquisition date. H Limited ने S Limited के shares कब खरीदा? On 31st December 2012, which is the last day of the year. So what they want us to prepare? They want us to prepare the consolidated balance sheet. We have to prepare the consolidated balance sheet. तो उसके लिए कुछ steps है. सबसे पहले what we will do? We will prepare the holding ratio. क्या prepare करेंगे? Holding ratio. Holding ratio कैसे निकालते हैं? Shares held by holding company. ये situation में tell me which is the holding company and which is the subsidiary company. Shares held by S Limited. H Limited ने H Limited acquired shares in S Limited. जो maximum shares खरीदता is the holding company and जिसका maximum shares purchase होता है is the subsidiary company. So H Limited is the holding company and S Limited is the subsidiary company. H Limited holding, S Limited subsidiary. So here, how much is the ratio? Shares held by H Limited is 5,000 and shares held by N Limited is nil because पूरा shares खरीदा गया. So everything, all the profits will now go to H Limited because H Limited के पास सारा shares है and S Limited के पास कुछ भी shares नहीं बचा. All the 100% shares have been
एक्वायर्ड बाय एच लिमिटेड, एस लिमिटेड का सारा शेयर्स चला गया. Now what we will do, let us find the capital profit. Capital profit means the profit before acquisition. Acquisition से पहले का profit. तो यहाँ पे देखो किसका profit? S Limited, it is subsidiary company का profit. Capital profit, whose profits we are calculating here. Here we will distribute the profit, shares, everything of the subsidiary company. हम holding company के shares को, profit को touch नहीं करते. हम किसके shares को, profits को touch करते? Of the subsidiary company. So कितना profit है subsidiary company का before acquisition? Acquisition last day में हुआ, तो यहाँ पे जितना भी profit है सब बिफोर एक्विजिशन का प्रॉफिट है. एक्विजिशन लास्ट डे हुआ तो उसके बाद कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, वो नेक्स्ट ईयर से होगा. सो विच आर द प्रॉफिट्स विच आर देयर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें है 5000. सी एस लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5000. Then we have general reserve. This is also there. This is 4000. दोनों को add किया तो we get the total profit, capital profit. Add, we get 9000. And because 100% holding है, as per the holding ratio, all the profit will be given to H Limited, because H Limited ने सारा shares acquire किया. So H Limited को पूरा capital profit मिल गया. Now next we will see is revenue profit. Capital profit के बाद revenue profit. Revenue profit is the profit after acquisition, but यहाँ पे acquisition last day हुआ है. सो रेवेन्यू प्रॉफिट तो कुछ हुआ ही नहीं. जितना भी सारा प्रॉफिट है वो एक्विजिशन से पहले था, बिकॉज एक्विजिशन टुक प्लेस इन द लास्ट डे ऑफ द ईयर. सो ऑल द प्रॉफिट इज द रेवेन्यू प्रॉफिट. सो यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी, ऑल द प्रॉफिट इज द कैपिटल प्रॉफिट बिकॉज एक्विजिशन टुक प्लेस on the last day of the year, on the last date. That's why there is no revenue profit. I had explained you capital profit मतलब acquisition से पहले का profit, revenue profit means acquisition के बाद का profit. But because acquisition took place on the last day में हुआ है, तो जितना भी profit है सब capital profit, कोई revenue profit है ही नहीं, because acquisition took place on the last date. Now after revenue profit, we calculate the cost of control. We calculate the cost of control. Cost of control में हम सबसे पहले लिखते हैं cost of investment. कितने में shares खरीदा? Cost of investment is given in the asset side. Cost of investment is given in the asset side. Cost of investment is 75,000 given. This is given. Cost of investment is given in the asset side. 5,000 shares खरीदा कितने में? 75,000 में. इससे लेस करते हैं capital profit. Capital profit of which limited? H Limited, that is the holding company. Capital profit कितना मिला? 9,000. Capital profit H Limited, that is holding company का, less shares held by H Limited. फेस वैल्यू में कितना शेयर्स है H Limited के पास?
एस लिमिटेड का 5000 शेयर्स है एंड वन शेयर इज ऑफ हाउ मच, वन शेयर का फेस वैल्यू कितना है 10. Let us keep it here. $5,000 into 10, that is the face value of the share held by H Limited. This becomes 50,000. कितना बचा अमाउंट? You get a positive answer, then it will be goodwill. Negative answer, then it will be capital reserve. जहाँ पे हमने 75,000 पे किया, हमें 9,000 फ्री में मिला बिकॉज कैपिटल प्रॉफिट मींस कंपनी को खरीदने से पहले ये प्रॉफिट वाज प्रेजेंट इन द बैलेंस शीट. खरीदने से पहले का प्रॉफिट ये तो फ्री में मिल गया. एंड 5,000 शेयर्स मिला 10 रुपीज का 50,000. सो दिस इज व्हाट this year what you get. फिर भी हमने 16,000 ज्यादा दिया है. See, we have given 75,000 और हमें मिला कैपिटल प्रॉफिट 9,000, शेयर्स मिला 50,000 का. स्टिल हमने 16,000 एक्स्ट्रा दिया है. That will be for the reputation of the company. Now last what we will calculate is the minority interest. माइनॉरिटी का कुछ इंटरेस्ट बचा है क्या कंपनी में? माइनॉरिटी का कोई इंटरेस्ट बचा है क्या? सारा शेयर्स तो एच लिमिटेड ने एक्वायर कर लिया. कुछ भी शेयर बचा है कंपनी में? all the 5,000 company had S Limited had 5,000 shares and all the 5,000 shares has been purchased by H Limited. So minority interest is nil. Minority interest is nil because all the shares have been purchased by, because 100% shares are purchased by holding company. सारा शेयर्स खरीद लिया, सारा शेयर्स खरीद लिया, इसलिए कुछ माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं. व्हाट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट? माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट ऑफ द सब्सिडरी कंपनी. सब्सिडरी कंपनी के लिए क्या बच गया है शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो सब हम लिखते, बट कुछ भी नहीं, सब होल्डिंग कंपनी को मिल गया. नाउ फाइनली वी हैव टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. सो लेट अस प्रिपेयर consolidated balance sheet of H Limited, which is the holding company, and its subsidiary S Limited, as on, what is the date? 31st December 2012. So we'll write 31st December. Here it is given 31st December 2012. Let us prepare the balance sheet. So balance sheet हम company के form में we will prepare, that is particular notes to account, notes and rupees. Particulars, notes to accounts, rupees. So how do we divide? We divide our balance sheet into two types. One is equity and liabilities. Equity and liabilities means this is the same format in which you have done in your TY accounts का वही company format.
शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर फंड में दो चीज आता है। शेयर होल्डर्स फंड में टू थिंग्स विल कम। वन इज शेयर होल्डर का राइट किस चीज में होता है, उनका कैपिटल and the reserves, that is the profits of the company, reserves and surplus. So ये find करने के लिए let us go to notes, note number 1 and note number 2. Let us go to notes of account, notes to account, I'm sorry, notes to account. पहला वाला नोट इसका है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल देखो ऊपर, अब हम क्या कर रहे हैं, कंबाइंड बैलेंस शीट बना रहे, H&S का कंबाइंड बैलेंस शीट। व्हाट डू यू मीन बाय कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट? वी विल कंसोलिडेट द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बोथ द कंपनीज, होल्डिंग कंपनी एज वेल एज इट्स सब्सिडरी, दोनों के बैलेंस शीट को कंबाइन करेंगे। तो शेयर कैपिटल एस लिमिटेड का तो हमने डिवाइड कर दिया, जब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाल रहे थे तभी 50,000 माइनस कर दिया इधर। देखो शेयर्स हेल्ड बाय एच लिमिटेड, ये 50,000 जो कि एस लिमिटेड का शेयर से ये माइनस कर दिया। तो अभी कितना बचा, सिर्फ एच लिमिटेड का शेयर्स बचा, शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर कैपिटल में कितना, 1 लाख। इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट हियर, यू वांट टू राइट कितना, एक शेयर 10 रुपीज का, सो यू कैन राइट हियर 10,000 equity shares of ₹10 each, 1 lakh. So here we will write 1 lakh. Then we have, let me remove this space. इसके बाद we have second note to account, that is reserves and surplus. So reserves and surplus में एस लिमिटेड का रिजर्व्स तो हमने डिवाइड कर दिया, कैपिटल प्रॉफिट निकाल लिया उसका, 5,000 and 4,000 has been taken into consideration to calculate the capital profit. So यहाँ पे भी रिजर्व्स भी सिर्फ एच लिमिटेड का लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस 20, जनरल रिजर्व 10. So we'll take the share capital and the reserves only of the holding company. सब्सिडरी कंपनी का तो हम डिवाइड कर लेते हैं। जनरल रिजर्व, how much it is? How much it is? It is 20,000. 20,000 and general reserve 10,000. So पूरा मिला के we get 30,000. So I will write here 30,000. Yes. So इसके बाद हो गया, equity is done. Now what we will get here, capital B, that is non-current liabilities. यहाँ पे हम इसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी लिख सकते, बट ये सब में तो है ही नहीं, इसलिए हम उसको इग्नोर कर लेते। नॉन करंट लाइबिलिटी कुछ है क्या, डिबेंचर्स, bank loan liabilities which are there in the business for longer period of time. We can see here
यहाँ पे कोई डिबेंचर, कोई लोन नहीं है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ओनली क्रेडिटर्स आर देयर. सो यहाँ पे आई विल राइट नी, है ही नहीं. देन वी हैव करंट लाइबिलिटीज. करंट लाइबिलिटीज में एक ही लाइबिलिटी है, दैट इज ट्रेड पेएबल, क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल. तो क्वेश्चन में देखो, वी हैव ओनली क्रेडिटर्स, बट क्रेडिटर्स को हमने एस लिमिटेड का किधर भी यूज नहीं किया. क्रेडिटर्स को किधर भी यूज नहीं किया. सो 10,000 प्लस 1,000 दोनों ऐड करो, क्रेडिटर्स ऐड करो 10,000 and 1,000. होल्डिंग कंपनी, वी आर प्रिपेयरिंग अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, so we will have to add all the assets and liabilities, जो कि अभी हमने रिजर्व्स एंड शेयर कैपिटल को छोड़ के सारी लाइबिलिटीज को हमें और असेट्स को हमें ऐड करना है. सो ये हो गया, दिस इज डन. लाइबिलिटी साइड हो गया, और कोई लाइबिलिटी नहीं है. वी विल हैव टू ऐड बोथ ऑल दिस, सारे लाइबिलिटी साइड में whatever is there everything we'll have to add. And then we come to assets. Assets में we have non-current asset, non-current asset देखो कुछ है क्या. non-current asset तो है ही नहीं. We have only current asset and investment. 1 minute before that, non-current asset में we have fixed assets. आप इसको प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट भी बोल सकते हो. फिक्स एसेट दो टाइप का है, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल. टैंजिबल तो कुछ नहीं है, कैसे पता. लुक इनटू द बैलेंस शीट, look into the balance sheet. Do we have any fixed asset given here? सिर्फ करंट असेट और इन्वेस्टमेंट है. सो टैंजिबल फिक्स असेट तो कुछ भी नहीं है. बट इनटैंजिबल में वी हैव गुडविल. गो चेक इनटू द नोट नंबर. यहाँ पे देखो डी में गुडविल मिला है 16,000. सो वी हैव इनटैंजिबल asset 16,000. So total will come here 16,000. इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज, that is non current इन्वेस्टमेंट. हमारे पास इन्वेस्टमेंट है क्वेश्चन में, देखो 5,000 शेयर्स इन एस लिमिटेड, फिर 75,000. बट ये हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के टाइम पे यूज किया. ये 75,000 वी हैव ऑलरेडी रिटर्न व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल. सो यहाँ पे अभी कुछ नहीं आएगा. विल हैव टू राइट नील. इन्वेस्टमेंट हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया. इसके बाद करंट असेट्स. करंट असेट गिवन है क्वेश्चन में. हाउ मच इट इज? 65 and 60,000. 65 and 60,000 ऐड करो. करंट असेट हमने किधर भी लिखा नहीं है. तो पूरा बैलेंस शीट में ओनली रिजर्व्स एंड शेयर कैपिटल, और ये इन्वेस्टमेंट, ये हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में भी दिखाते. रेस्ट एवरीथिंग वी डू नॉट शो एनीवेयर. तो वो सब असेट्स एंड लायबिलिटी को सब्सिडरी कंपनी एंड होल्डिंग कंपनी का भी ऐड, एंड देन वी प्रिपेयर अवर consolidated balance sheet. Now add how much you get. Add 16,000 and 1,25,000. How much we get? 1,41,000. Here also share capital 1 lakh, reserves 30, and 11,000 we get
1,41,000. With this, we can see that our balance sheet liability side is equal to our balance sheet asset side, and this consolidated balance sheet is done. टैली हो गया, इसके साथ ये सम भी हो गया, एंड इसके साथ आई विल एंड टुडेस लेक्चर. I have explained you every concept in this chapter, and we have done one sum also. With this, I will end today's lecture. Thank you very much, everyone.